Hello students, this video is for grade UKG. Let us start. So, this sheet is divided into three different parts in which we will learn about three different subjects: English, Maths and EVS. Let us start with our first subject, Maths. Question says, color the box with bigger number. Okay, you can see each column. Okay, each column has two numbers. हर column में दो number दिए हुए हैं. Each column has two numbers. Now what you have to do is you have to color the box with bigger number. जिस column में box में बड़ा number होगा, bigger number होगा, larger number होगा, उसी को आपको color करना है. So choose any one of your color and start the question. Like the first one is 14 and 41. Now tell me 14 और 41 में से bigger number कौन सा है? Which one is bigger? 14 and 41. Which one is bigger? Yes, 41. 41 is bigger. So we have to color that box in which 41 is written. जिसमें 41 लिखा है उस box को हम color करेंगे. Now see the next column in which another two numbers are given, 20 and 2. 20 है और 2 है. So which one is bigger? कौन सा number bigger है? बड़ा कौन सा है? Yes, 20. 20 is the bigger number. So we will color the box, that box in which 20 written. जिसमें 20 लिखा है हम उस box को color करेंगे. So understood? What you have to do is you have to color the box with bigger number. जिस box में बड़ा number दिया है उस box को आपको color करना है. Let us revise counting 1 to 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40, 41, 42, 43, 43, 44, 45, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 50. So we have read counting from 1 to 50. Let's move to our next section, which is of English. The question says, say the name of the picture and write the ending letter. In this, what you have to do, you have to write the ending letter of the picture. मीन्स यहाँ जो पिक्चर दिए, इस पिक्चर का जो आखिरी लेटर होगा वो आपको यहाँ पे राइट करना है. द फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ स्नेक. पहली पिक्चर किसकी है? स्नेक की. सो द स्पेलिंग विल बी SNAKE. Snake. So the ending letter means the last letter is E. What we will write in the box? E. See the next picture. It is of a rat. Rat की picture है. RAT. Rat. So the last letter of rat is T. What we will write? Letter T. In this way you have to write the ending letter, means the last letter of the picture. पिक्चर का जो स्पेलिंग है उसमें जो लास्ट लेटर आता है वो हमें यहाँ पे बॉक्स में राइट करना है. अंडरस्टूड? या. नाउ let us move to our last section, which is of EVS. The question says, describe your favorite season in 3 to 4 lines. मीन्स आपका जो भी फेवरेट सीजन है उसके बारे में 3 से 4 लाइन आपको राइट करनी है, डिस्क्राइब करना है 3 से 4 लाइन में उसे. सपोज इफ योर फेवरेट सीजन इज समर, तो आप क्या राइट करेंगे? माई फेवरेट सीजन इज समर and I like it because we can eat or drink cold items like cold drinks, watermelons, ice creams, and at that time we get mangoes also. So मतलब आपको वो समर सीज़न है तो समर सीज़न आपको क्यों पसंद है, ये चीज़ें आपको उसके बारे में राइट करनी है. अपने फेवरेट सीजन को आपको डिस्क्राइब करना है. उस समय में आप कैसे क्लोथ्स पहनते हो, क्या करते हो, कहाँ घूमने जाते हो, ये सारी चीज़ें आपको राइट करनी है. सपोज योर फेवरेट सीजन इज़ विंटर, सो विंटर यू विल राइट माई फेवरेट सीजन इज़ विंटर सीजन एंड वाई डू यू लाइक इट, वॉट डू यू लाइक अबाउट इट, एंड हाउ डू यू स्पेंड योर सीजन. मतलब आप अपने सीजन को स्पेंड कैसे करते हो, अपने विंटर सीजन को कैसे स्पेंड करते हो, कैसे कहाँ जाते हो, क्या करते हो. ओके, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर राइट करनी है. अंडरस्टूड? सो इन दिस वे यू हैव टू राइट about your favorite season. I hope you all have understood this sheet very well. If you still have any kind of doubt related to any question, you can ask me. Thank you.